Namaskar dear students. In the previous video we have studied about chemical properties of metals, that is reaction of metals with oxygen and reaction of metals with water. Today we will study about reaction of metals with acid. General formula: metal when reacts with dilute acid, there will be formation of salt and hydrogen gas. In the laboratory we are using three different types of acid: hydrochloric acid HCl, sulfuric acid H2SO4 and nitric acid HNO3. Two equations are given. Zinc when reacts with hydrochloric acid, it will give zinc chloride and hydrogen gas. Similarly, magnesium when reacts with sulfuric acid, there will be formation of magnesium sulfate and hydrogen gas. We know the test for hydrogen gas. Now, hydrogen gas is not evolved when a metal reacts with nitric acid, because nitric acid is strong oxidizing agent. It oxidizes the hydrogen produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide, N2O nitrous oxide, NO nitric oxide, NO2 nitrogen dioxide. But there are two metals, magnesium and manganese. Both the metals react with nitric acid to evolve hydrogen gas. Reactions are given. Metal when reacts with dilute HNO3, there will be formation of salt, any of the nitrogen oxide and water. But there are two metals, magnesium and manganese, they will react with nitric acid and there will be formation of salt and hydrogen gas. There is one compound known as aquaresia. Actually, aquaresia is a mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid, and both the acids are mixed in the ratio of 3:1, and this aquaresia is used to dissolve gold and platinum. Next is reaction of metals with solution of other metal salts. Most reactive metal displaces least reactive metal. Reactive metal can displace less reactive metals from their compounds in solution or molten form. General formula is metal A when reacts with salt solution of B, there will be formation of salt solution of A and metal B. One example is given: iron when reacts with copper sulfate, it will form iron sulfate plus copper. कॉपर सल्फेट इज़ ब्लू सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट में जब हम आयरन नेल्स डालेंगे तो 30-35 मिनट्स के बाद क्या हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ब्लू कलर का सैंपल ग्रीन कलर के सैंपल में कन्वर्ट हो जाएगा और आयरन नेल्स पे कॉपर का रेडिश ब्राउन डिपोजिशन हो जाएगा. दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ reactivity series. The reactivity series is a list of metals arranged in the order of their decreasing activity on the basis of their relative tendency to lose electron and their reactive nature. Metals are arranged in a series and this series is known as activity series or reactivity series. और ये जो reactivity series है इसका formation chemical प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के अकॉर्डिंग किया गया है. सी द सीरीज. डिफरेंट मेटल्स आर लोकेटेड अप टू डाउन. मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स सबसे ऊपर हैं और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स सबसे नीचे हैं.
और रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो किया गया है. सी द डिफरेंट मेटल्स. सोडियम, फर्स्ट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, and hydrogen is written. Although hydrogen is non-metal, लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, इसलिए इसको रिएक्टिविटी सीरीज में इंक्लूड किया गया है. हाइड्रोजन से ऊपर जितने मेटल्स हैं दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन. कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड ये हाइड्रोजन से नीचे हैं. सो दीज आर नोन एज लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स देन हाइड्रोजन. सो दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज विच इज़ ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी सीरीज, एंड दिस सीरीज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और आपको ये एक्टिविटी सीरीज के जो मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इनको आपको लर्न करना होगा. Remaining part we will study in the next video. Thank you.